dear students, in this video we will continue our topic or chapter polynomials with exercise 2.5, which is based on the algebraic identities. So first of all, before the starting of this lesson, I want to clear about the algebraic identities and uses of it. When will it applies? So first algebraic identity is x plus y whole square, and we all know that x square plus y square plus 2x y. For example, 2a plus 3b whole square can written in this format: 2a whole square plus 3b whole square, 2ab, then 2 into 2a into 3b. So the next result is 4a square plus 9b square plus 3 to the 6 to the 12ab. And we can also use the vice versa of it. Means if in the question it is given, then we can use this one. मतलब हम ये सिस्टम के लिए अपन ये अप्लाई कर सकते हैं और इस सिस्टम के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर 24pq. सपोज ये आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसके फैक्टर्स करने हैं. So we will write this 3p whole square plus 4q whole square plus 24 को 3 4 3 into 4, then देखो 24 को लिख सकते हैं अपन 2 into 3 into 4, 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2ab इस टाइप से. तो ये हो गया 3 into 4 and 2 बच रहा है, 4 3 जा 12 2 जा 24. इसके लिए pq, तो p यहाँ पे ले आओ 3 के साथ में and with the q with 4, then 2 into 3p into 4q, and this can be written in the formation a square plus b square plus 2ab, that's 3p plus 4q whole square, and finally these are the factor 3p plus 4q and again 3p plus 4q. Got it? And now I am writing direct identities. Our second identity is x minus y whole square is equals to x square plus y square plus minus 2x y. Now the third identity, x minus y into x plus y is equals to x square minus y square. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. नाउ द फोर्थ, x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू x प्लस y स्क्वायर. सॉरी y है इसमें ab. ये था फोर्थ आइडेंटिटी. इसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं. लाइक ऐसे रहता है 4x plus 5 into 4x plus 9. इसको अपन लिख सकते, देखो both are same, these are different and plus symbol also here. So x square and where x is 4x square plus a is 5, b is 9, 5 plus 9 into x is 4x plus 4 into 9. Finally 16x square plus 14 4 जा
56x plus 9 4 36. It is the example of the fourth identity. And now let's write the next. Our next identity, fifth, is x plus y plus z whole square. X square, y square, z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Next identity, x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. And it can be written in this formation also: x cube plus y cube plus 3xy into x plus 1. Next identity number 7, x minus y cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. And it also can be written in this formation: x cube minus y cube minus 3xy x minus 1. Identity number 8, x cube minus y cube is equals to x minus y x square plus y square plus xy. And last identity number 9, x cube plus y cube is equals to x plus y into x square plus y square minus xy. ध्यान रखना, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और माइनस के लिए यहाँ माइनस और प्लस के लिए यहाँ पे प्लस. So these are our total 9 identities, and the whole of the exercise is based on these 9 identities. So let's start the exercise. Exercise 2.5. Use the suitable identity to find the following products. Listen. First question, first part. Use the suitable identities to find the product of the following functions. First is x plus 4 and x plus 10. सेकेंड यहां कर लेते हैं, x plus 8 into x minus 10 only one part is remaining. So let's start. इसके लिए देखो both are same. So x plus a, x plus b. This is equals to x square a plus b into x plus ab. So now apply. X is x. X is x square plus a is 4 and b is 10 into x plus 4 into 10. X square plus 14x plus 40 is answer.
सिमिलरली फॉर इट अगेन बोथ आर सेम, दीज आर डिफरेंट, तो ये इसके जैसा ही है, बोथ आर सेम। तो +4 +8 बट इट इज +10, ये प्लस में और ये माइनस में, तो चेंज कर लो, x +8 and it we can write x ±10, and I am using again the same identity for it, x square means square of this, x square plus 8 minus 10 into x plus 8 into minus 10। बस कुछ नहीं किया, वैल्यूज अप्लाई किए हैं, जहां पे x है वहां पे x रखा है, a है वहां पे 8 और b है वहां पे -10। x square -2, then minus plus minus -2x and minus plus minus 10 adds up 80. This is the answer. Again similarly for this 3x plus 4 and 3x plus minus 5. So 3x square plus a plus b, but it is minus, into x is 3x plus a into b. So 9x square minus, ये -1 होगा, -1 को 3 से -3x and minus plus minus 4 is 5 4 is 20, and last is this, both are same and both are same but sign are different, then x plus y into x minus y identity will apply here, it will become x square minus y square. So finally x is y square and then square again, देखो x की वजह से y square है, तो x is the y square and then square minus 3/2 whole square, finally y to the power 4 minus 9/4. These 4 part I have solved and only one part is remaining, so you will try to solve yourself. Now next question number 2. Evaluate the following without multiplying using the proper identities, and there are total 3 parts. First part is 103 into 107. Second part यहां लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट 95 into 96, and last part third 104 into 96. देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 100 plus 3, मल्टीप्लाई तो नहीं करना, आइडेंटिटी यूज लेनी है, और इसको लिख सकते हैं 100 plus 7. समझ में आ गई बात क्या? These both are same and these both are different. So x plus a and x plus b is equals to x square a plus b into x plus ab. Now apply all these value here. X square means 100 square plus a 3 into 3 and b is 7 into x is 100 plus 3 into 7, it is 10,000. 7 plus 3 17, 7 plus 3 10 into 100 is 1000 plus 7 3 is 21. So answer is 11,021. It is the answer. Now for this 95 को अपन लिख सकते हैं 100 minus 5 into 100 minus 4. 100 minus 5 into 100 minus 4. देखो both are same but these are different. पहले तो इसमें भी ये आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन इसको इसके जैसा बनाए तो सही पहले, तो इसको लिखा जा सकता है 100 plus
-5 and it is 100 plus minus 4 like this. नेक्स्ट स्टेप अक्स, यहां पे देखो अक्स 100 है, a -5 एंड b इज -4. अप्लाई करें यहां पे 100 स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 10,000 -900 एंड प्लस 20. इसमें से ये माइनस करेंगे 9,100 प्लस 20. फाइनली आंसर 9,120. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. इसको देखो अपन यूं लिख सकते हैं 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4. मीन्स ऐसे लिखोगे जिससे आइडेंटिटी अप्लाई हो पाए. तो ये जितने भी फॉर्मेशन उनमें मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि इनकी आइडेंटिटीज एप्लीकेबल हो रही है. यहां पे both are same and both are same but symbol is different. Then x plus y into x minus y is equals to x square minus y square. Finally for this 100 square, x is 100 minus 4 square is equals to 10,000 minus 16, 9,984. It is our answer. Okay student, now the next question, question number 3. Factorize the following using appropriate identities. Question number 3, part first. 9x square plus 6xy plus y square. And second part 4y square minus 4y plus 1. Third part x square minus y square upon 100. Look very carefully. देखो इसको यूं लिखा जा सकता है 3x whole square and now come on this plus from here y whole square. देखो x square plus y square plus 2xy. तो हम इसी के हिसाब से वो अब ऊपर मत जाओ, यही चेक करो 2xy. x is this and y is this. अब इसको सोल्व करके चेक करेंगे ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है. तो 3 2 6xy, तो मतलब कि ये आइडेंटिटी बन रही है. और ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी? x प्लस y, x प्लस y, 3x प्लस y होल स्क्वायर. मतलब इसको यदि ओपन करेंगे तो ये आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा. तो इसके फैक्टराइजेशन आपके क्या क्या हो जाएंगे? 3x प्लस y एंड अगेन 3x प्लस y, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेशन में है ना, दैट्स वाई. अब यहां पे आ जाओ, इसको अपन लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 1 स्क्वायर बिकॉज़ 1 स्क्वायर इज 1. ये माइनस 2 into लिशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x y. अब इसको सिंप्लीफाई करो 2 to 4y. ठीक है. x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है x माइनस y होल स्क्वायर एंड फैक्टर्स आर 2y minus 1 and 2y minus 1. एंड नाउ द लास्ट, देखो इसको यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस
y upon tan to the power 2. X square minus y square is equals to x plus y into x minus y. So it is the answer of third part of the question number 3. So students, we have completed 3 questions. Now let's proceed to the question number 4. Expand each of the following using the suitable identities. हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है. अभी फैक्टराइज नहीं करनी. फैक्टराइज आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बस. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट. फर्स्ट इज x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर. इसके लिए जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी इसके लिए अप्लाई होगी. where x is x, y is 2y and z is 4z. तो जहां जहां x है वहां पे x, y की प्लेस पे 2y and at the place of z is 4z plus 2 x is x and y is 2y plus 2 y is 2y and z is 4z plus 2 4z into x 4zx. Now open this, open all the brackets. X square plus 4y square, square of 2 is 4 and y square is y square plus 16z square, 2 to the 4 xz plus 4 to the 8 to the 16 yz plus 4 to the 8 zx. So it is the answer of the first part. There are total 6 parts and I am going to explain the 3 parts of this. अब मैं बता रहा हूं आपको 4th पार्ट. This is 3a minus 7b minus c होल स्क्वायर. देखो ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन दोनों अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, बट यहां पे सिंबल्स यहाँ है पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है. तो पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं. कैसे होगा? 3a ऑलरेडी ये देखो ये प्लस का है तो ये भी प्लस का. ये प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर. सॉरी होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं है. नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी, द सिमिलर सेम आइडेंटिटी फॉर इट. क्या होगा? x ये देखो x है, ये y है और ये z है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 into xy. x is 3a and y is minus 7b. 2 into xy plus 2yz, 2 into y, y is minus 7b and z is minus c. 2zx, 2z, z is minus c and x is 3a. Open the bracket. 9a square plus minus square is plus 49b square, similarly c square and my plus and plus minus 7 is a 21 to the 42ab
plus minus 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 plus 7 to the 14 BC and plus minus minus 6 AC. So this is the answer of this part. Now let's start the last part. Part number 6. Which is 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 होल स्क्वायर. देखिए x प्लस y प्लस z, तो पहले इसको बनाना होगा. वन अपॉन 4a प्लस माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1 एंड देन होल स्क्वायर. ये x मान ले, ये y मान ले, ये z मान ले. Then x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square 2xy plus 2yz plus 2zx. 1 upon 1 square is 1, 4 square is 16a square plus 1 upon 4b square plus 1, 2 2s are, then 1 upon 2a, plus minus minus, या फिर एक बार लिख देता हूं, प्लस 1 upon 2a, 1 upon 2a into minus 1 upon 2b. इससे कैंसिल, ये बचा माइनस b इंटू 1, तो 1 से इंटू होगी, यही देगा 2 2 जा, तो क्या बचा प्लस 1 upon 2a. So the last answer 1 upon 16a square 1 upon 4b square plus 1 and plus minus minus half 1 upon 4ab and minus b plus half a. It is the answer of the last part of the question number 4. So let's start on the next question, question number 5th. Factorize. First part I am solving. 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx. इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर. लगेगी कैसे? पहले क्योंकि इसमें तो माइनस भी आ रहे हैं, इसको अपन यूं लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4z स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. आप प्लस माइनस को अवॉइड करेंगे, माइनस को अवॉइड करेंगे, हम प्लस ही कंसीडर करेंगे. 2xy 2x इंटू 3y. थोड़ा सा इसके पीछे स्पेस रख ले क्योंकि माइनस भी कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, वो होगा कहां वो हम चेक करेंगे. प्लस 2yz y एंड z 3y and z is 4z plus 2zx. Z is this and x is this. 4z
इंटू 2x। देखो अब माइनस सर्च करो कहां है, इन दोनों में है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कौन से में, लास्ट में, यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है 4z। तो जो कॉमन है उसके माइनस लगा दो और बाकी छोड़ दो बस। तो माइनस किसने कैरी किया है, 4z ने, तो 4z। समझ में आई बात यहां तक? मतलब ये बना आपके पास 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर। और फाइनली ये लिखा जा सकता है 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, और इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y minus 4z. So this is the factor of the part first. So let's proceed the next part number second. I hope that you understood the answer of this question. The next part is second. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz। यहां थोड़ी सी टिपिकल नहीं है, अंडरवुड में वैल्यूज हैं। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx is the formation of, then we can say that x plus y plus z whole square identity can be applicable here। होगी कैसे? 2 किसका स्क्वायर होता है, अंडरवुड 2 का, अंडरवुड 2x होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां पर? y किसका होता है, खुद का ही होता है, एंड 8 होता है अंडरवुड 8 का। अंडरवुड 8 को लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 2, और 4 को बाहर लाके लिख सकते हैं 2 रूट 2 होल स्क्वायर। और इसका वापस समझे तो 2 2 जा 4 एंड अंडरवुड 2 इज 2 इज इक्वल्स टू 8। तो वापस यही आ जाएगा। इसका मतलब यहां लिखा जा सकता है 2 रूट 2 y सॉरी z है ना, z होल स्क्वायर। एक बार प्लस यूज लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 2xy, x इज रूट 2 x एंड y इज y प्लस 2y इंटू 2 रूट 2z प्लस 2zx 2 रूट 2z इंटू x इज रूट 2x। अब एक बार इनको चेक करते हैं कि ये इनकी जैसे ही आ रहे हैं क्या। ये देखो ये तो ये है, ये भी ये, इनको चेक कर लेते हैं। 2 रूट 2xy 2 रूट 2xy 2 टू द 4 रूट 2yz 4 रूट 2yz 2 टू द 4 एंड रूट 2 4 टू द 8zx 8zx। अब बात आती है कि प्लस माइनस किस में है, एक तो इस टर्म में है और एक इस टर्म में। और इनमें कॉमन क्या है, इनमें कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाली एंड लास्ट ये वाली। व्हाट इज द कॉमन इन दिस बोथ कॉमन, ये 2 को कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर करना है इनमें से। तो इनमें कॉमन है रूट 2x तो इस पे माइनस लगाते हैं और बाकी प्लस के होंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा अब इससे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर देन रूट 2x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस किस पे लगा, माइनस 2x पे, तो यहां माइनस आएगा, ये माइनस।
फाइनली क्या हुआ अपने पास, इसके फैक्टर हो गए माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z. Okay student, in this video we will do till here and the remaining part we will solve in the next part. I hope that you understood whole of the parts, whole of the question and their parts also, and some parts are remaining. You will solve yourself, and if you feel any kind of the difficulties, any queries, then you can make it, you can write in your comment box and suggest me. I will try to simplify them.